Good morning everyone. I am welcoming all the students of class 3. So today we are going to start SST class. Please take out your social studies book. So in previous class we have finished chapter 2. So I am going to start chapter 3 part 1 from class 3. This is for class 3. Okay. So today we are going to learn environment. Environment means वातावरण. environment, ये सब हरियाली, यहाँ देख रहे environment, right? So you can see page number 19. In page number 19 you can see chapter 3 environment. Environment is the natural world of living and non-living things that surround us. Environment is the natural world. ये natural things है जहाँ पर living things भी रहते हैं, non-living things जहाँ पर हम लोग रहते हैं, where we live in our environment. In environment there are living things and all non-living things. Okay, so the land we live in, the air we breathe, the water we drink, and the soil in which we grow plants. The land we live in, the air we breathe. जहाँ पर हम लोग, जहाँ land, which land? The land we live in, the air, हवा, air we breathe. The land, the water we drink, जहाँ पर पानी है जो हम लोग पीते हैं. So and the soil in which we grow plants and trees are all natural resources. These are all natural resources. Okay, so these are the natural resources. What are they? Air we breathe, the water we drink, and the soil in which we grow plants. These are the natural resources. ये environment में मिलता है. Okay, so we find in our environment. ये सब natural resources we can find in our environment. What are they? The air we breathe, हवा, air means, and the water. These are the natural things that we found in our environment. So without these resources we cannot survive on the earth. Without these resources, when there is no air, there is no water, there is no soil, we cannot survive on the earth, or we cannot survive on our earth. Okay, these are the main resources that we have in our earth. Okay, so it is therefore essential that we take good care of them all. These are the things that we have to care. We have to take care of them. So we don't have to pollute, water pollution, air pollution. Okay, because of the pollution we cannot feel good. Okay, so but very often we put these things into harmful uses. Yes, these are nowadays, in our generation we are putting them in harmful uses. Harmful, हम लोग को harmful uses में हम लोग use कर रहे हैं, like smoking. Smoke जो करते हैं, जो smoke करते हैं तो वो हवा में वो होता है, air pollution होता है. So air pollution होता है तो किसको harm होता है? हम लोग को harm होता है. That harms us only. Okay, so but very often we put these things into harmful uses, damaging environment. The act of causing harm to the environment is called pollution. The act of which harms us, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Harm to the environment, which harm to the environment is called pollution. Like things such as smoke or waste matters that pollute the environment are called pollution. I am giving you the example: waste matters, plastic, polythene we used to throw outside the road. These are also the pollutions. Okay, there are four main types of pollution. Air pollution, land pollution, water pollution, and noise pollution. We have to
keep our environment safe and clean. Okay, we don't have to we cannot harm our environment, because whenever we do like this, we harm our environment, they harmful back to us, because smoking is harmful for us, waste product is harmful for us. Okay, so there are 4 main types of pollution. हम लोग environment में 4 main pollutions है. What are they? Water pollution, air pollution, land pollution and noise pollution. Okay, let us study in details about the causes of pollution. In previous class, in class 2, we have learned about noise pollution. I have told you what is noise pollution and what is air pollution. We have posted the pictures in our class also, right? So I think you have understand the noise pollution and air pollution. आप लोगों को पता होगा air pollution और noise pollution, क्योंकि मैंने class 2 में भी आप लोगों को ये air pollution और noise pollution के बारे में बताया था. Okay, and we have posted the pictures in our class. Okay, let us study in details about the causes of pollution. Now we are going to learn what are the causes of pollution in details. Okay, you can take out page number 19, air pollution. Now we are going to learn what is air pollution. All living beings need air to breathe. All living beings and human beings need air to breathe, because we have to survive on earth. When harmful gases mix in the air, it causes air pollution. When harmful gases like smoking, they mix on the air and we get harm. So, if we breathe this polluted air, we suffer from breathing problems like asthma and many other diseases. So, if we breathe this polluted air, जहाँ से हम लोग की polluted air से सांस लेते हैं, ये air से ही हम लोगों को क्या होगा, बीमारी फैलेगा, like asthma and many other diseases. So, air pollution caused due to the following reason. Now, what are the reasons that how air polluted? Okay, now we are going to learn how air pollution is caused by. So, smoke let out by vehicles like cars, buses, trucks, etc. Smoke let by vehicles से भी धुआं आता है, वो भी air pollution है. Next, कार से भी air pollution होता है, buses, truck. So whenever you see there car स्मोक कर रहा है, कार से धुआं निकल रहा है, गंदा सा ब्लैक कलर का धुआं होता है, एयर पोल्यूशन है वो. सो whenever you see, you have to put in your mouth मास्क पहनिए आप लोग, ठीक है. सो poisonous gases released by factories, poisonous gases. Okay, burning of dry layers, waste coal, petrol, rubber tubes, tires, etc. In your house, you used to burn tires, coal, petrol, rubber tubes, टायर्स, ये सब आप लोग जलाते यूज़ करते घर पे. सो घर से ही आपको क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है. सो डोंट डू दिस causes our environment, this causes air pollution and they will harm us. Okay, so we have to save our environment, we have to keep our environment clean. Cutting of trees are our main sources of oxygen. Trees is the main sources of oxygen. In nowadays, we are cutting the trees. So save trees first of all. We have to save our environment, we have to save our trees, we have to clean, we have to keep our air clean. We have to what we have to do? Don't cut the trees. First, tell your parents or tell those who are cutting the trees, you have to tell them don't cut the trees. They gives us oxygen. Okay, they gives us air, they gives us fresh air. ट्री क्या देता है, पेड़ क्या देता है हम लोगों को, सुबह सुबह हवा आता है पेड़ से, ऑक्सीजन देते हैं, है ना.
So we have to save trees nowadays. Okay, so nowadays trees are less. पहले क्या होता था, बहुत सारा पेड़ दिखता था, जंगल दिखता था. अभी क्या होता है, लोग पेड़ को ही काट रहा है. क्यों काट रहा है? क्योंकि पेड़ जंगल से दिख रहा है, ये गंदा हो रहा है, ये सब हो रहा है. इंसान को घर बनाने के लिए लोग पेड़ काटते हैं. ओके, सो वी डोंट हैव टू कट द ट्रीज, वी हैव टू सेव द ट्री बिकॉज ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन. ओके, वाटर पोल्यूशन. Now we have learned air pollution. Air pollution, what are the causes of air pollution? Smoke let out by vehicles. Vehicles से धुआं आता है, जो काला धुआं, फैक्ट्री से धुआं आता है, निकलता है. So cars, buses, trucks, they pollute air. वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं. So air pollution causes due to the following reason. They are the reason why air pollution causes. Okay, we don't whenever your friends are burning some trees or your friends are doing some rubber tubes, tires etc, ये सब वो लोग जला रहे होते, तो उन लोगों को बोलिए कि मत जलाइए. इससे हम लोग का क्या होगा, वातावरण गंदा हो, एयर पोल्यूशन हो जाएगा. इससे वातावरण को हार्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट हार्म हो जाएगा. सो टेल देम to whenever you see somebody they are burning the tires, they are doing something wrong, so you have to tell them, don't cut the trees, don't do this, because they harm our environment. We have to save our environment. Okay, so water pollution. Water is very essential for our life. What essential means? Importance. Essential. वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. लाइफ के लिए हम लोग जो इसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है, वो इसेंशियल मीन्स आवश्यक. ओके, सो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर थिंग्स. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. वाटर बिकॉज we drink water, we use water for bathing, for cleaning clothes, for cooking, for washing, growing plants, water and other things. If we make water dirty, it becomes unusable. So there are several human activities by which various water bodies get polluted. If we make the water dirty, it becomes unusable. So whenever you drink water, what you have to do, you have to check first this water is clean or not, because nowadays water is also dirty. Water is coming dirty. पानी भी क्या होता है, गंदा होता है. हम लोग जब भी पानी पीते हैं तो हम लोग उबाल के पीते हैं, right? So we have to drink boiling water, boil water. Okay, so there are several human activities by which various water bodies get polluted. Human activities से water pollute होता है. So many things that human beings pollute water. Human beings से water pollute होता है. Okay, they are as follows. Now I am giving you some examples that from that human activities which pollute water. Human activities की वजह से water pollute होता है. तो कैसे, आप लोग को पता नहीं. So we are going to read now. Releasing and mixing of swag, dirty waste water from houses, washing clothes and utensils in water bodies, bathing of animals, dumping of waste by factories, immersions of idols of girls and ashes of dead. So हम लोग पानी में क्या करते हैं, washing clothes, we used to wash clothes and utensils in water bodies like this you can see there. हम लोग जब भी नदी के पार जाते हैं तो हम लोग कपड़ा धोते हैं. कोई वहीं पर जो मरता है, जो who deaths, उन लोग को वहीं जला कर वहीं फेंक देते हैं पानी के अंदर. So they are the water pollutions. We don't have to keep our water dirty. So
रिलीजिंग एंड मिक्सिंग ऑफ स्वैग डर्टी वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसेस। जो गंदा कुछ कचरा होता है वो हम लोग कहाँ जाकर फेंकते हैं? नदी में। एंड द रिवर, वो रिवर कहाँ आता है? पॉन्ड में आता है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न where water comes from, right? So you have to know, we have to keep our water clean. पहले रिवर से आता, पहले लेक से आता, फिर सी के बाद रिवर, रिवर के बाद पॉन्ड में आता, वही पानी हम लोग पीते हैं। So we have to clean our water clean. Like air pollution, air pollutions harm us. एयर पोल्यूशन से भी हम लोग को बहुत सारा बीमारी होता है, like asthma, and there are many diseases. We cannot breathe properly. So we have to clean our environment. That's why we have to clean our environment clean, and we have to save trees. Okay, and we have to keep our water clean. So in your house, आप जब भी आप घर का काम कर रहे हैं, मम्मी का हेल्प कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे मम्मी को कि हम लोग ये कचरा साइड में डस्टबिन में रखेंगे और एक दो दिन में हम लोग फेंकने के लिए ले जाएंगे। बट उसको ना जलाकर नहीं जलाएंगे आप लोग। डस्टबिन है, डस्टबिन से बाहर फेंकिए, जहाँ पर कचरा हो कचरा वाला ले जाने वाला गाड़ी में आता है। सो यू हैव टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। आपको ही अपना इन्वायरमेंट साफ रखना है। ओके, सो रिलीजिंग एंड मिक्सिंग ऑफ स्वैग डर्टी वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस। आप जो गंदा कुछ कचरा काबड़ ये सब पानी में फेंक देते हैं, और कोई भी इंसान आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड एसेस ऑफ डेड, हम लोग भगवान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, यू सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा एंड सम फेस्टिवल्स लाइक सरस्वती पूजा। आप उस पूजा के दिन वो भगवान को ले जाकर आप लोग नदी में डुबाते हैं। सो दैट पॉल्यूट्स वाटर, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। आप भगवान को लाकर मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में चढ़ाइए, है ना। सो दैट कैनॉट हार्म, दैट कैनॉट हार्म। आप मंदिर का सामान मंदिर में ही रखेंगे तो वाटर भी गंदा नहीं होगा, है ना। सो वो वाटर हम लोगों के पास ही आएगा, रिटर्न बैक। बिकॉज आप लोग वाटर सोचते हैं रिवर का पानी पॉन्ड में, रिवर का पानी जैसे भी करके घूम कर पॉन्ड में आता है। सो वो पॉन्ड का पानी हम लोग पीते हैं, राइट। सो वी हैव टू क्लीन आवर वाटर, वी हैव टू सेव आवर वाटर, वी हैव टू सेव आवर इन्वायरमेंट। सो pollutions water is harmful for human beings as well as plants. Polluted water is harmful for us and harmful for plants also. Okay, it causes several diseases in human beings. I am telling you, it causes several things in human beings. It causes diseases like gastrines and typhoid and even skin diseases from dirty water pollution. They causes many diseases like skin diseases, typhoid, malaria and gastroid. So gastric होता है, आपको जॉन्डिस होता है। कैसे होता है जॉन्डिस? कैसे फैलता है? water pollution, through water pollutions, because we keep our water dirty, we drink dirty water. That's why they are harmful for us. Whenever you drink water, you have to drink hot water, boiled water. आप लोग गर्म पानी पीजिए, आपको हार्म नहीं होगा। and air pollution, we have to clean air pollution. air pollution का causes भी मैंने बताया, how air polluted. What are the causes of air pollution? So you have to save trees and you have to clean water. So these are the pollutions. So today we have finished air pollutions, water pollutions. Tomorrow we will learn what is noise pollution and what is land pollution and how they harmful. How they are harmful. कैसे harm करता है land pollution and noise pollution. Okay. So I think we have understand the chapter what is air pollution and what is water pollution. Tomorrow we will learn what is land pollution and what is noise pollution. Okay, for today this much. Thank you. Have a good day.